So hey everyone, welcome back to the channel. I have come up with my Hindu editorial word meanings and synonyms again today. So I have written all the word meanings and have taken all the editorials today. पहले I used to search for the right one or the interesting one, the one which is useful for all of us. Today, I found that all the editorials are very much enriching. They are very much valuable in terms of knowledge. So I have written all the meanings, difficult words which were there in those editorials. I have taken all the five editorials. So first editorial talks about put out the data, boost the dose of transparency. So it is talking about that on 25th December, Narendra Modi ji have announced to give the vaccine to the 15 to 17-year old children, right? They're also talking about giving some booster vaccine to old people, to people who are suffering from comorbidities. So I have also written the meaning of comorbidities. Now this has already come before as well. So slowly, as the word will be used as soon, I'm sorry, मेरे को शायद इस चीज़ को एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा, so I will just do it again. जो वर्ड ऑलरेडी 2-3 टाइम्स ऑलरेडी यूज हो चुका है प्रीवियस वर्ड मीनिंग्स डॉक्यूमेंट में, आई विल नॉट यूज दैट वर्ड अगेन. ठीक है. अभी कोमॉर्बिडिटीज इज द third time that second time that we are using it. Okay, there are many words today in the word meaning that we are using second or third time. So if they come again, I would, if they appear again, I would not use them, or I will not give the meaning. If you want to refer, you can refer to the previous documents. I've been giving all the documents, all the PDFs to you, so you will not face any problem. Alright. So this is again a very good. I have yesterday only told that I am going to mention the abbreviations also. Why? Because it is recommended. It is very much good if you read the abbreviations again and again rather in an abbreviation form. You use it the full form, it becomes a very credible thing for you. Why? Because you naturally learn the full form. When the paragraph or when the editorial ends, you know the full form of that word, that abbreviation. So it is not it is not as such the difficult task that you can feel later on. So that is why I have started using these abbreviations also in my word meaning. So these are the abbreviations I have also written. Now the second editorial talks about the pertinent issue of trust and the Indian politicians. So it talks basically about how much it is important to have a good vote value. कि यूपीए जो है, यूपीए सरकार जब आई थी उस तब क्या लुकआउट था और अभी क्या लुकआउट है. कुछ सर्वेज के बारे में बात की गई है जिसमें इंडियन ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे के बारे में भी बात की गई है. किस तरीके से हमारे जो ऑल पॉलिटिक्स को खेला जाता है और किस तरीके से जो एक ह्यूमन है, एक नॉर्मल आम आदमी है, वो कैसे परेशान हो जाता है. सो अच्छा आर्टिकल था. वेरी देयर वर सो मेनी गुड वर्ड्स. सो आई हैव रिटन ऑलमोस्ट ऑल द वर्ड्स in these word meanings. Then third was Desmond Tutu, the conscience keeper. Basically, Desmond Tutu is a South African who just recently died, and they're talking about the ideas, they're talking about the struggle that this person have done. They are, giving examples like Lala Lajpat Rai and Ram Krishnan, and there are many Indians they are talking about in the paragraph. So it is again a very good paragraph related to knowledge, in terms of knowledge, and you can definitely grasp some good point out of it. Then we have vying for influence over Kabul. So basically, what problem Kabul is facing. Okay, what are the problems? What are how it had been, cold shouldered by the people. So it is again a very informative kind of editorial. Why? Because they are talking about how others are not helping.
ओके। एंड हाउ अभी रिसेंटली हमने शायद लास्ट वीक का एक एडिटोरियल था जिसमें कि वो काफ़ी बड़ा एडिटोरियल था जिसमें कि वो बात कर रहे थे वुमेन स्टेट की, इसमें कि किस तरीके से जो इनइक्वालिटी है कितनी ज़्यादा है, और जस्ट बिकॉज ऑफ द क्लोथ्स एंड ट्रीटिंग वुमेन एज स्लेव्स एंड डूइंग हैविंग डोमेस्टिक वायलेंस कितना ज़्यादा बढ़ गया है। सो ये बहुत पहले भी आया था, ऑल्दो अभी बहुत छोटा सा आर्टिकल है ये, पहले भी आया था और वो भी बहुत अच्छा आर्टिकल लगा था मुझे पढ़ के, जिसमें वुमेन सेफ्टी के बारे में बहुत बात की गई थी यहाँ पर। सो अच्छा आर्टिकल है, ये भी ज़रूर रीड करिएगा, एंड आई हैव रिटन ऑल द वर्ड्स रिक्वायर्ड। Then lack of political will, this talks about the Tamil Nadu and Park State का जो प्रॉब्लम चल रहा है इन तमिलनाडु श्रीलंका में। तो श्रीलंका के हमारे जो कुछ तमिलनाडु के लोग हैं उनको अगर सी पर देखा गया है तो श्रीलंकन ने उनको मार दिया, गोली मार दी, मतलब दिस इज सम काइंड ऑफ आर्टिकल जिसमें कि ह्यूमैनिटी को ह्यूमनिज्म का बेसिस वो बोल रहे हैं कि होना चाहिए, बट वो नहीं है। और उसमें किस तरीके से जो फिश फार्मर्स हैं उनको ये बिल्कुल भी राइट नहीं है दैट दे कैन क्रॉस द बाउंड्री, राइट, इफ दे सी देम दे किल देम, एंड हाउ इट इज गोइंग टू मैनेज, क्योंकि जो इस तरीके से अगर जॉब इस तरीके से वर्क होगा देन इट इज़ नॉट गुड फॉर द इंडियन पीपल। सो ये तमिलनाडु का पार्ट है, और इस तरीके से वो आर्टिकल में यही बताया जा रहा है दैट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द पॉलिटिकल विल देयर इज नो ट्रीटी, देयर इज नो कोई जिसमें बीच में इसमें डील नहीं हो पा रही है, विच इज हार्मिंग अ लॉट टू द कॉमन पीपल। सो अगेन अ वेरी गुड आर्टिकल, वंडरफुल आर्टिकल, एंड यू मस्ट रीड ऑल द आर्टिकल्स टुडे। अच्छे हैं, इंफॉर्मेटिव हैं, and it is going to help you a lot, right? So keep watching, please keep subscribe, please subscribe the channel, share, and as well as like. Thank you so much all of you. Take care. Bye bye.